You can't just import essay. Python is so easy to read, right? It's a natural language. It's very, very easy to read. It's not like Java or C++ or other languages. If I'm 2 pages in and I still have no idea what you're saying, right? This is Java code. Now there is no offense. There is nothing against Java coders. पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत ज़हीन लड़के लड़कियां हैं जो कोडिंग करते हैं Java में और सब हैं. There is no offense. This is just a joke. So light-hearted joke है. Please इसमें serious मत होइएगा इंशाल्लाह. Let's move on. So if and else, else if, basically it's an else if key statement. It's a short form. You can extend an if statement even further with else if, which is short of else if. It's a short form, which is a short form of else if. Now, for example, we can check if a person age is 10, 11 or 12 and so on, right? अगर 10 है तो ये print करना, else अगर ये है तो ये print करना, अगर 12 है तो ये print करना, right? So you can basically design this code. अब ये code use करके आप age restrictions लगा सकते हैं, आप content restriction लगा सकते हैं. I don't know पाकिस्तान में अगर कोई जैसे कि अगर कोई Netflix पे जाता है, जैसे यहाँ Netflix चलती है, it's an online, आप बैठ के घर बैठ के देख सकते हैं. तो उसमें अगर आप अपनी एज रिस्ट्रिक्शन आप बच्चों की सेट कर सकते हैं कि बच्चे भाई ये चीज़ें देख सकते हैं, बड़े ये चीज़ें देख सकते हैं, सो एंड सो फोर्थ, राइट? सो बेस्ड ऑन द एज क्राइटेरिया वो वैसी तरह कंटेंट इनेबल करता है. इसी तरीके से तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एल्स इफ की स्टेटमेंट जो है दे कम वेरी हैंडी. सो देयर इज़ अ कोड एग्जांपल जो मैंने यहाँ रखा हुआ है. यू कैन जस्ट सिंपली कॉपी पेस्ट इट और यू कैन टाइप इट. आई वुड सजेस्ट कि आप टाइप करें सो दैट यू नो एक्जैक्टली किस तरह से टाइप हो रहा है. यू कैन चेंज दिस थिंग. अब एज में यहाँ पर स्टेटमेंट्स अलग लिख दें कि अगर 10 है तो अगर एज 10 है तो send शरफू टू गेट सम सम रोटी. अगर 11 है और यहाँ टाइम कर दें, इफ़ टाइम इक्वल्स 10 तो शरफू को रोटी लेने जाना है. इफ़ टाइम इक्वल्स 11 तो शरफू को सब्जी लेने के लिए भेज दें. इफ़ टाइम इक्वल्स 12 देन यू कैन से कि शरफू को अपना दूध लेने के लिए भेज दें. इज जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट? मैं अपने बच्चों को इस घर में शरफू बोलता हूँ, अपने बेटे को कि शरफू चलो काम करने आ जाओ, तो ही कम्स एंड ही हेल्प्स मी आउट इंशाल्लाह. बिकॉज वी एट अवर होम हम लोग उर्दू में ज़्यादा बातचीत करते हैं ताकि बच्चों को उर्दू आए. कम से कम बोलना उर्दू है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं. लेकिन द पॉइंट इज़ के अगर हम उर्दू में बात नहीं करेंगे दे विल लूज दैट एसेंस, राइट? सो दैट्स द की थिंग. आई मीन यू कैन चेंज इट, यू कैन मॉडिफाई इट. अगर यहाँ 13 भी नहीं होती कुछ और होती है तो प्रेस हाँ. आई मीन व्हाट डज दैट मीन? आई डोंट अंडरस्टैंड, राइट? सो वी कैन ट्राई दिस इन पाइथन. नाउ दिस इज़ जुपिटर नोटबुक जिसमें मैंने टाइप किया हुआ पहले से आपके लिए जस्ट टू सेव टाइम. अगर मैं आपके सामने सब कोड लिखूंगा it will make the class more lengthy, right? That's not the idea. The idea is कि आपको 10 से 15 से 20 मिनट में आपको एक लेक्चर दे दिया जाए एक टॉपिक के बारे में ताकि आप उसको समझें और उसको प्रैक्टिस करें एंड देन मूव ऑन इंशाल्लाह, राइट? सो अगर देखें अगर 12 साल की उम्र है, अगर 10 साल की उम्र होगी और मैं रन करूँगा, अगर एज 10 होगी तो करेगा what do you call an unhappy cranberry? A blueberry, right? I don't know अगर आपको पता हो, cranberry is basically sweet berry. It becomes sweet, it has a tangy flavor. And then blueberry, आपको शायद पाकिस्तान में पता हो blueberries are just like berries, blue कलर में होती हैं. I heard कि पाकिस्तान में अब वो आना शुरू हो गई हैं स्वाद वगैरह में लोग ग्रो कर रहे हैं, so on and so forth. This is the most common berries over here. अगर एज मैं उसको 11 करता हूँ then it will move on to basically next line. अगर मैं इसने ये skip कर दिया next पे लिया. अगर मैं इसको 12 करता हूँ then it will move on to the next line. अगर मैं इसको 13 करता हूँ it will move on to the next line. अगर मैं इसको 14 करता हूँ इट वॉन्ट से हाँ. आई मीन दैट्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम कि भाई अगर एल्स कोई डिफाइन ही नहीं है, अगर ये पैरामीटर 10, 11, 12, 13 नहीं है देन आप जस्ट से हाँ. आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग, राइट? सो कभी कभी आपको ऑनलाइन ये चीज़ें नजर आएंगी जो वेबसाइट में एम्बेडेड होती हैं, गेम्स में एम्बेडेड होती हैं. दैट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर यू इंशाल्लाह. कंडीशंस को आप कंबाइन भी कर सकते हैं, कंबाइनिंग कंडीशंस, दैट्स द की थिंग. यू कैन कंबाइन कंडीशंस बाय यूजिंग द कीवर्ड्स एंड लेट मी सी and or which produces shorter and simple code. Here is an example of using like age अगर 10 है आपके पास, if age is 10 or age is 11 or age is 12 or age is 13 then print else, just print, मुझे समझ नहीं आएगी क्या है. तो अगेन जो ऑपरेटर्स, ये इक्वल्स टू का ऑपरेटर है, दो इक्वल्स टू के साइन. आप तमाम दूसरे ऑपरेटर्स भी यूज़ करके देखें, एक्सपेरिमेंट विद द प्रोग्राम इटसेल्फ कि आप देखेंगे क्या क्या चीज़ें आती हैं एंड ट्राई इंशाल्लाह. ओके, अगर आप एज 15 करेंगे तो इट विल प्रिंट हाँ, लाइक बिकॉज 10, 11, 12, 13 यहाँ पर नहीं है, एज 15 के बराबर आ रही है. इट डजंट नो व्हाट टू डू, सो इट विल स्किप द स्टेटमेंट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अगेन प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा अपने इसके ऊपर ताकि आप देख सकें कि जुपिटर नोटबुक में रिजल्ट कैसा आ रहा है. यूजिंग द ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर एंड लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर. नाउ दिस इज द की थिंग. ऑपरेटर के जो साइंस हैं, अगर इफ एज इज ग्रेटर देन 10 एंड एज इज लेस देन 13 देन प्रिंट दिस, एल्स प्रिंट हाँ. अगेन इसको ट्राई करें आप. लेट्स ट्राई दिस ऑन आवर एंड एज वेल. Let's try this one.
यहाँ पर हमने कोड लिखा हुआ है जुपिटर नोटबुक के अंदर, इफ़ एज इज इक्वल्स टू 10 is greater than 10 and age is less than 13, then you do this, then you print this, otherwise print this. So let's say 10 पे अगर हम करते हैं तो क्या होता है? Yep, greater than or equals to, remember, right? Greater than or equals to. Then it printed this. अगर मैं इसको 11, अगर मैं इसको 14 कर दूँ, which is greater than 10 or equals to 10 and less than equals to 10, what will do? You just say, huh? I don't know, it's like, because the parameter जो defined हुआ है वो 10 और 13 के 13 से कम और 10 और 13, 10 या 10 से बराबर, 10 के बराबर या 10 से ज़्यादा, यानी 13 से कम होना चाहिए, तो फिर ये प्रिंट करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 12 करूँ, इट विल प्रिंट दैट नंबर. इफ आई से 13, will still because less than or equals to, remember? So that's the key thing. So please घर में आप अपने operators के साथ इसको experiment करें. There is no rush, you can go on your own pace, but we want you to experiment with these things to understand कि भाई आप किस तरीके से इसको आगे लेके चल सकते हैं इंशाल्लाह. This is another example जो भी हमने practice की है. That's the key thing. So let's move on to the next topic, which is variables with no value. That's the key thing that we are going to discuss now. So just as we assign numbers, strings and lists to a variable, we can also assign nothing or an empty value to a variable. In Python, an empty value is referred to as none, and it is an absence of a value. अगर आपने none किसी चीज़ की value रखनी है, कुछ नहीं रखना, तो you have to type in none, right? That's how we define Python. It is important to note that the value none is different from the value 0, because it is the absence of a value rather than a number with a value of 0. That's the key thing. Please इसको गौर से पढ़ें statement को. None का मतलब ये नहीं है कि वो 0 के बराबर है, नहीं. It's not a value 0, but basically वहाँ कोई value exist नहीं करती. Python में none और ज़ीरो में डिफरेंस है, राइट? ज़ीरो इज़ अ नंबर, नन यानी कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं है आपके पास, दैट इज़ नन. द ओनली वैल्यू दैट अ वेरिएबल has when we give it the empty value none is nothing. So let's review an example of this thing. So my val equals none. If my val equals none, then print the variable my val doesn't have a value, right? So you type that in, right? This is useful when you only want to calculate a value for a variable if it has already been calculated. ये इससे यूज़ केसेस हैं, हम आगे करेंगे इंशाल्लाह. बट द पॉइंट इज़ कि अभी फ़िलहाल आप इतना समझ लें कि भाई अगर आपने किसी चीज़ की वैल्यू नन डिसाइड करनी है, देन यू जस्ट टाइप इन नन, राइट? विद दैट. सो अगेन परेशान मत हो, आहिस्ता आहिस्ता अपनी कंफर्ट बढ़ाएं इंशाल्लाह. इन द नेक्स्ट 2 months टाइम वी विल कंप्लीट पाइथन एंड देन वी विल मूव ऑन टू मशीन लर्निंग एंड देन डीप लर्निंग. फॉर 2 months वी विल 2 to 3 months हम मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, 2 to 3 months हम लोग डीप लर्निंग पढ़ेंगे और 2 months हम AI पढ़ेंगे. Then in the next 6 to 9 months you will be up to speed with all of these things. अगर आप 6 महीने के बाद जब इसको पीछे मुड़ के देखेंगे, आप कहेंगे यार कि अल्हम्दुलिल्लाह में तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, पहले कुछ नहीं आता था, बहुत सारी चीज़ें आ गई. But the point is कि इंशाल्लाह that's the beginning, and then you will be ready to take on these advanced courses.